Do we have any names? I'm finding myself is a different. We have many people. So we have got Ruth Anu, Krishna, Dr. Krishan. Administrator, please read out the names one by one. But my format seems to have changed. I don't know why the format seems to have changed today. Okay, let's start. We have Ruth Anu first. Yes, Ruth Anu. Shivam Guruji. Yes. Bolo. Guruji, can we say about enlightenment that persistence guarantees that results are inevitable? Come again. Can we say that in enlightenment? Persistence guarantees that results are inevitable. Persistence guarantees that results are inevitable. What do you mean? Where have you picked this from? This is by Swami Smarananda. Oh my God. Oh my God. हाँ अभी मुझे समझने में 10 मिनट लगे बोलो क्या बोल रहे हैं आप persistence क्या बोल रहे हैं कौन सा इंग्लिश में है Persistence guarantees that results are inevitable. Persistence guarantees that results are inevitable. No. See, you may persist, but if you persist, but your karma of your past is there, all your persistence will not work. The results, so I don't know I don't remember what Swami told. I'm not against whatever any Swami says. I am not referring, I don't even know which Swami you're talking about. I only said that you picked from somewhere something, you are Krishna number 2. Pick something from somewhere and then you come and tell me now, explain this to me. How I will explain this to you now? I cannot comment on this. Next, because it's very wrong for me to comment something, somebody is right or somebody is wrong. But what you have said, I'm not going by what any Swami has said. Persistence ensures that results are inevitable. Persistence cannot ensure that results are inevitable because there is some karma. That's why bad things seem to happen to good people. Bad things don't happen to good people because we don't know what is the bad thing done in the previous karma that's happening now. Krishna. So how we will get enlightenment? What is the enlightenment? कहाँ गया आपका? और एक बार repeat करो. Persistence. Persistence guarantees that results are inevitable. Enlightenment word कहाँ है? आपने enlightenment के बारे में बात ही नहीं किया. Suddenly from the back door you're bringing the word enlightenment. That is true. Come on, Tanu, be fair नहीं to me ना. अगर हम persistent रहेंगे हम तो फिर भी हमें past karma की वजह से enlightenment नहीं मिलेगा. If you are persistent, that means anybody is persistent, they'll be enlightened. No, persistence cannot equal enlightenment. You persist. See, enlightenment ke liye we have given you magic. We have given you Pirlu. We have given you the formulas. You have to follow the formulas. We have given the 8 stages of spiritual awakening. और क्या चाहिए आपको? 1, 2, 3. There are 3 methods. We have given you 3 areas. Either purification, illumination, realization, liberation, unification. Either mumukshutvam, M-A, acceptance, G, overcoming ignorance, being in consciousness. Either you follow one of the methods, either Mumukshu, Jigyasu, Jnani, Yogi, Buddh, Jivan Mukta, Sthit Pragya, Satchidanand Atma. You follow one of the methods. Not something you pick from some podcast and come and tell me. Krishna. Yeah. Krishna, bolo. So Shivam sir, मुझे वो रूतानु का question का little bit मुझे भी अभी आया कि even if you do magic kurlu whatever, that means do you mean to say that if your karma is strong, we will not proceed further? My dear, you leave karma behind na. When you are Buddha, then where is karma for a person who's Buddha? Yeah, but that is what she meant by persistence, no? That persistence without transcending karma, where the persistence will work. Okay. I thought in the spiritual path ka persistence.
नहीं, persistence हो तो भी ना. Suppose I'm sitting. There's a door. I want to break the door open. I keep on kicking. The door will be open. But there's no door. There's a wall. I keep on kicking the wall. Will the wall break? Yeah. So, my question is because the last 2 days the topic was so introspective and it was very very profound. So now मेरा एक simple question because it's beginner session. आपने yesterday love and hate का relationship बताया था, and love and hate has a different meaning when it comes to spirituality. Yes. So now, who is a true friend, sir? What is friendliness? Who is a true friend in spiritual dictionary? Or we have so many friends otherwise. So who is a true friend now when we have come to this path? How to pick or who is a true friend? What do you mean by true friend? True friend who will assist me, who will, I don't know what. I'm asking What do you. No, but the minute you're bringing true friend, what is in spirituality, if you want to evolve, Yeah. must you talk about this is good friend and that is bad friend, or you must talk about see sipinol and love sipinol and serve sipinol? No, sir. If I say, then you'll again say I'm picking up from some books. But Obviously, if you pick from some book, means you're picking from some book. yeah, Huh? and my basic understanding is from Bhagavad Gita, because yesterday when you said hatred, when in the Bhakti Yoga, Bhagwan is giving 36 values for a Bhakta. We simply say we are a devotee, but Bhagwan has clearly enumerated 36 qualities. This means the first quality was Advaishti Sababhutana, no Which hatred. book? Second is Maitri. Which Bhagwan Bhagavad has done Gita, it? 12th chapter, Bhagavad Gita, 12th chapter. What is saying? First is Advaishti, like hatred, which you discussed yesterday. So Like what if is you it? have, because you said even an iota of hate, if you have, you are not a God realized person. Same way, the second quality which is said in Bhakti Yoga is Maitri, friendliness. So then I was thinking, then what is Maitri? What is friendliness? Maitri is to have Maitri with all. Had Bhagwan told, have best friend, bad friend. Show me which Bhagwan told like that. Bring that Bhagwan here. Bring that Bhagwan. I want to see that Bhagwan. Which Bhagwan is telling Maitri must have a good friend and best friend and second best friend? Girish, any Bhagwan told like that, Girish? Huh? Best friend, any Bhagwan told you must have best friend? Maitri means being friendly to all. But let me tell you, in a practical way, who should you be friendly? Now, for example, you have got a Wafadar Kutta. Wafadar Kutta or Zahrila Samp. In one side there's a Wafadar Kutta, then one side there's Zahrila Samp. Hindi, you understand? No. Loyal dog and a poisonous snake. Then who you should be friendly with? For that you must have your buddhi. You must be in consciousness. You must use your intellect to choose your best friend. You don't choose your best friend out of emotions. You choose even a friend, even a good relationship should happen not from the heart, it should happen from the head. Relationships sometimes fail because their relationships are only emotional. A best friend, suppose I just know my best friend, but that best friend is not your best friend. Then how does it work? There's no using rational. There's no using logic. No, best friend cannot happen emotionally. Best friend has to happen intellectually. But Maitri should be for all. You're a little confused. Any more clarity you want to ask now, or you're going to think? Yeah, I'm confused because yesterday जब आपने बताया मुझे like किसी का phone हमको अच्छा लगता है, किसी का we don't feel like even talking, when we have. That is not hate. That is not hate. Hate is the quality of dislike. You don't like somebody's phone, okay, but don't dislike that person. The moment there is dislike means you bring hate, means you can't be God realized. Some people say, if I see that person, no, I will kill them. No, that's not good. Disliking, hating is not good in God realization. Dr. Krishan.
Sir, Guruji, many dhams and many spiritual holy place. When we visited, we found that there are many sadhus are there. They totally surrender their life to the God, and mainly they are doing nam jap. Either Radha Radha, Krishna Krishna, even ISKCON is saying Hare Krishna, Hare Rama. This is mantra, Mahamantra will be continue in your mind every time. That can still your mind. Is there any spiritual importance or any spiritual benefits? Will the people get enlightenment in their life through Nam Jap? Naam Jap will create bhakti. Bhakti will give Shakti. That Shakti must lead to Mukti. There is no direct connection. Okay. Suppose you want to go from Bombay to New York. Bombay to New York, this flight may not be direct. Bombay, London, London, New York. Like that. So there is no direct Hare Krishna, Krishna Krishna, Mukti, Mukti. No, cannot be. Hare Rama, Rama Rama, Moksha, Moksha. Cannot be. So they surrender their life to the God, and What is the they meaning? do. They understand. Hold on. Surrender life का मतलब क्या हुआ? They leave all these materialistic world things. They know that Do they Maya is see? surrounding Do they them. see? Do they see God in all? Do they see? हर वो जानते हैं कि हर इंसान में भगवान है, आत्मा परमात्मा है, वो जानते हैं. उनको अनुभूति हुई है, अनुभूति हुई है. Many sadhus are there. अरे साधु का कल I was just somebody told me very good movie. Oh my God, #2. Very good movie. Oh my God. मैं 2 मिनट देख रहा था. क्या मतलब क्या oh my God हो गया. मैं वो अघोरी साधु है. आपने देखा मूवी? देखा आपने? थोड़ा बहुत देखा सर. मैं मूवी देखता नहीं. हाँ, मैं भी देखता नहीं. क्या स्विट्जरलैंड में तूफान था, तो स्विट्जरलैंड में तूफान होने के कारण मैंने शुरू किया. क्या बिकॉज देयर वाज अ स्टॉर्म. हम लॉक हो गए, तो देखा कि क्या देखेंगे, गॉड का पिक्चर देखेंगे. तो व्हाट आई एम सेइंग, No, my means वो each and everything which जो spiritual life में सिखाया जाता है, understanding of karma, they say God in all. They even know that we are the part of God. They may, then why you are saying only bhakti? Be clear. they adopt the method Nam Jap. Even many religions. Krishan, सुनो Krishan, be very clear Krishan. Stop. अगर नाम जप से मुक्ति या मोक्षा मिल सकता है, तो जो भी नाम जप करता है उसको मिलना चाहिए. करेक्ट? सिर्फ नाम जप नहीं है. अगर मैं आपको दरवाजा का एक चाबी देता हूं, I give the key, open the door, I give the key to you. If I give the key to Krishna, the door should open. If I give the key to Girish, door should open. If I give the key to Tina, door should open, because that's the key. मान लिया सर. अगर आपका चाबी कृष्ण के हाथ से नहीं खुलता तो फिर नाम जप ओनली नाम जप से मुक्ति नहीं मिलेगी. ये मेथड हो सकता है. ये इट्स कैन बी अ मेथड टू स्टिल योर माइंड, or it can be a method not only to still your mind, it can be a method to still your mind, it can be a method to reach anubhuti, but that bhakti will create that anubhuti. That bhakti has to lead to, that bhakti has to open the door to jnana. I think Vivekananda explains this a lot in his book, if I'm not mistaken. You can't just sit. फिर तो हर इंसान मंदिर में बैठ जाएगा. Jing 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 chicka jing chicka jing 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 jing. I told you I was wanting oh my God 2 में अघोरी साधु. क्या ये अघोरी साधु क्या करते हैं? सबको मोक्ष मिलेगा? Then हम सबको we all will stop Zoom call, we all become अघोरी.
No, no, that's why I firstly said they surrender their life to the God and they are understand the karma of law of karma and each and everything. Mr. Krishan Dr. Kalam, when you want to surrender yourself to God, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं लोभ मोह क्रोध को छोड़ के उसका अनुभूति मतलब की है, तरफ बढ़ रहा हूँ. उसका मतलब है आपने भगवान को समझा ही नहीं. आपने आपको और भगवान को अलग कर दिया. अगर हमें पाना है तो हमें हमें एहसास होना है कि मैं ही प्रभु हूं, ना कि मैंने. वो एहसास होने के बाद सरेंडर करना है, नॉट एहसास होने से पहले. ओके ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन के बाद में ये आता है मैं ही भगवान हूँ. सब हर एक इंसान में भगवान है. मैं भगवान कोई आकाश में बैठा कोई अवतार नहीं है. हर इंसान में भगवान है. अब ये और लोग जो भक्ति करें, ये भक्ति करें, ये क्या करें? उन्हें अनुभूति हुई है? अनुभूति कुछ नहीं हुई. ओ प्रभु मैंने तुम्हें अपने आप को अर्पण किया, प्रभु मैंने अर्पण किया. हो गया, अर्पण हो गया. अर्पण फिर वो जाके बोलते लड़ाई करते, मुझे 4 पूरी प्रसाद क्यों नहीं मिला? वही आदमी जाके लड़ाई करेगा, मुझे 4 पूरी प्रसाद आज क्यों नहीं मिलेगा? बी प्रैक्टिकल. अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, यू टेल मी. आई होप बी प्रैक्टिकल. जस्ट बाय नाम जप करने से प्रभु को मैंने कोई ये नहीं नहीं पा बोला सकता. सर. मैंने सिर्फ नाम जप नहीं बोला. मैंने बोला नाम जप उन्होंने एक टूल बना लिया अपने माइंड को स्टिल करने का. वो अंडरस्टैंड करें सेल्फ रियलाइजेशन भी है गॉड रियलाइजेशन भी है. और वो ये भी मान रहे कि मैं भगवान का तत्व हूँ. और उन्होंने एक मेथड बनाया भक्ति योग की तरह वो नाम जप का कि भाई when bhakti becomes bhakti yoga, then you can reach mukti. okay. Bhakti should become bhakti yoga. Bhakti is not enough. You are talking, be clear, you are talking about bhakti. There's a difference between bhakti and bhakti yoga. When bhakti becomes a yoga, then you become a yogi. Okay, okay. Then they can take the benefit of and they will enlightenment. मैंने कभी नहीं कहा कि भक्ति के द्वारा मोक्ष नहीं मिलेगा. भक्ति शुड बिकम अ शक्ति. वो शक्ति से मिलेगी मुक्ति. रिमेंबर द वर्ड्स भक्ति, शक्ति, मुक्ति. तो शक्ति भक्ति मुक्ति नो, भक्ति शक्ति मुक्ति. शक्ति का जागरण होना मैंडेटरी है. ओके, थैंक यू सर. टीना, थैंक यू. टीना, टीना, unmute Tina, please. Tina, Adit Kailash, are you unmuting Tina? Yes, muted. Yes, Guruji. yes. Tell me. Shivoham Guruji. My question is, my question to you is, when prayer is a powerful weapon, then can we pray to a person immaterial of the person having a good or bad karma? Why should you pray to a person having good or bad karma? Why should you do that? He says, pray for me. What happens when you pray for somebody, Tina? Since you are talking the subject, let me ask you, what happens when you pray for somebody? Tell me this. Suppose I start praying for you. Oh, I pray for Tina. I pray for Tina. Tina, God, Tina, it's very nice. I pray, oh God, Tina. What will happen if I pray for you? Just tell me that. See, each one has our own karma. So by praying for you, it's just like my saying, oh Lord, I'm eating food, let Tina's stomach get full. I'm eating food, you give Tina's stomach. No, honestly, this whole concept of praying for somebody is not a good thing. Don't need to do that. See, Tina, practically, I'll tell you. If I'm praying for you, that means I am ignorant. Because you are already a manifestation of God. You are SIP. Do I have to pray for SIP? Does SIP need my prayer? No. Then why am I praying for you? And can I change your karma?
Can I change your, can I, no, I can't. What am I praying for you for? This is what Buddha said. When Buddha, Buddha once, a very good story. One day Buddha was having an argument with a Hindu priest who on prayer. So he was sitting on a river. And he was sitting on the river, and that prayer, the Swamiji was sitting down there, and he made a havan, and he was praying, Oh Swaha, Om Swaha, Om Swaha, Om Swaha, Om. Then Buddha went and told the Swamiji, what you are praying like this? What happened? Swamiji said, I want to cross the river. Okay. So Buddha said, by praying, how you will cross the river? Actually, a little different story, but this is. Then Buddha said, he asked him, how can one cross the river? If the water is shallow, how can one cross? He said, the water is shallow, we can walk across. If the water is deep, how to cross? If the water is deep, you can swim across. If the water is very ferocious, how to cross? You can take a boat. But just by sitting and doing swaha, 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 swaha. So this is a story of Buddha, in what context it happened. But just by praying for somebody, I know that. I hope I answered your question. I don't know. You said you were talking about praying for somebody, right? Whether good karma, bad karma. You can, if somebody tells you, Tina, please pray for me, tell them, sure, I will pray. That's okay. Of course, I will pray. But don't see. You are SIP. Spend your time and energy trying to realize you are SIP. If I tell you, you please pray. What you pray for? You please pray that, oh, this power bank should come alive. Oh God, this power bank. Oh God, let the green power bank become a green parrot. Oh God, I'm praying for this green power bank to become a green parrot. Oh, it will become a parrot. No. Keep on praying for 100 years. It will become a parrot. No. And then what? Okay. Meenakshi. Hello. Meenakshi. Yes, hello. Yeah, hi, sir. Hi, Sir, bolo. I have two questions today. Like, first one is, what is the importance of charity in spirituality? Because I am that kind of person, like I don't do help of others. I mean, I don't do help of others. My nature, which is not my nature. If somebody asks any help to me, then I do whatever possible what I can do. But somebody is, I can, the person is helpless, then I don't do automatically help to that person. So what is the, I mean, is that okay or is it not okay? Let me Kind of. explain to you. Very simple answer. Yeah. In charity, if you are charitable or you are compassionate and kind and helpful, it is good karma. If you are not compassionate and kind and not helpful, it is bad karma. But I don't So do if any you are harmful things. then it is no karma. Then there is no karma. So there is neutral karma, there is neutral karma, there is good karma, and if you do bad, there is bad karma. Okay? But in charity, therefore, the first aspect of doing charity is it's a good karma. Yeah. But when you realize that SIP is in all, when you realize har insan mein Bhagwan hai, then that charity becomes a puja. That becomes a real prayer. Because that becomes love for God, means you are serving God. Okay, and before God realization, also we can do as much as possible. We should do. Because it's good karma. Before God realization, see, in this journey of life, there are two steps. First is bad karma or good karma, what we must do. Good, obviously. Second is good karma or no karma, what we should do. Good. No karma means you No go beyond karma. That sense. Okay, then no karma. No karma means getting good karma or getting no karma. The goal of transcending life is karma. Transcending karma. Bad karma, good karma, good karma. Good karma, transcending karma, transcending. So that is the way to go from level 1 to level 2. Okay, got it.
The second point I have, second thing I have, like, so when you say that the God should be your priority every time, nothing should come in between to that. So whenever we are doing our like routine work, how do we get the priority? How do we make that the God priority? Like whenever is that the thing that we should remember always the God in our back of the mind? You want this is the most important question and answer in life, what you're asking. This is the single most important question and answer in life. Single most. Okay. You live not as Meenakshi Jain. You tell Prabhu, I am not Meenakshi Jain. This is Meenakshi Jain. I am not this Meenakshi Jain. I am that Atma. That Atma is a drop of your energy. I will live for you. I will live for you. That's all. Then living for Prabhu means you. Living for Prabhu means you have to remove Bharti Ramesh. Remove Bharti Ramesh. So there is living for Prabhu means then you are nothing. What am I doing today? Take my life. What is my goal? Every day of my life, what is my goal? Only one thing I have. Everything for God. Were you there for one session? I called it Ladi. Were you there for the session Ladi? Yes. Ladi. Living as a... Then whether you tell Prabhu's name or you don't tell Prabhu's name or anything, nothing matters. So consciousness must be always there that whatever I'm doing is that the Prabhu. If you are able to Ladi, Beda Par, that means finish. You don't need anything else in this world. Live as a divine. Why it don't come easily? I mean, whenever we do our work, we forget that I am the divine instrument. Because the body mind ego attaches us. That's the talk on Friday. What is the missing link? That discussion is on Friday. What is the missing link that stops me from being Ladi? What is the missing link that stops me from enlightenment? What is the missing link that stops me from liberation? Okay. There is a missing link. It can be attachment. It can be hate. It can be shame. Many links, many. I'm talking of all the links on Friday. Aham sip. Shivoham Guruji and all others Yes. sit in the call. Bolo. Guruji, something unwanted has happened to one of my family members. I didn't get disturbed the moment I came to know, and it was immediate acceptance and that तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो सुख में दुख में मेरे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो. But still, sometimes a thought comes to my mind कि ओहो अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा. But I'm not disturbed. A passing thought comes. So does it mean that my surrender to God and my faith in God is incomplete? It's not incomplete, but you are being attacked. Just now there was a person in the call who was trying to show some vulgar pictures in the call. Does it mean the call became dirty? The call was not become dirty, but somebody attacked the call. Somebody is attacking you. That episode is attacking you to see how peaceful you can remain. Okay. See, Ahimsip, you are very advanced in the subject. जो भी हो रहा है what is happening is all karma. Yes. और सब कुछ लीला है और सब कुछ माया है. Yes. हम सब जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं जो होना है वो होना ही है. तो फिर क्यों डिस्टर्ब होना? डिस्टर्ब नहीं होना, बट वो थॉट क्यों आ जाता है, मतलब वही मुझे नहीं समझ आ रहा. It's attacking you ना. Be calm. Thank you. Because understand one thing. जो होना है वो होगा. हमारे सोचने या ना सोचने से it's not going to change. Change होगा? आपके चिंता से कुछ change होगा? नहीं.
आपकी प्रेयर से कुछ चेंज होगा? नहीं, मैं वो सब कुछ कर भी नहीं रही हूँ, बस एक थॉट आता है बस। तो वो थॉट को लेके उसको थॉट को अर्पण करो। वो ठीक। थॉट प्रभु वो आपको अर्पण करते हैं। Okay. Thank When you. you arpan it, then there is nothing to worry about. Good questions today. Ruth, Anu, and Kailash. Guruji, this book from where I had taken was this Start Where You Are, a journey for self-exploration. Very good. So what should I do? Oh, no, nothing. So in that it is written this persistent guarantees the results are inevitable. What is there? What is enlightenment got to do with that? Now, sir, if we keep on continuing praying God and we are as a yogi, then we will get enlightenment. If not enlightenment, you will get good karma. At least something. That's what the author is trying to make you do good karma. Author is saying be persistent. What is wrong in what he's saying? Nothing wrong. Be persistent. But author is not giving you the method to get enlightenment. Is there method any better method? I want to learn. Please give me. You have any better method? Please teach me. No, Guruji. I am always waiting to learn a better method. I am always waiting to for Sip, like yesterday Sip told me, thoughts are karma. I was shaken because for 100 talks I said thoughts are not karma, thoughts are not karma, thoughts are not karma. Suddenly Sip told me thoughts are karma. I have asked you. So many times I think I have asked you same question. What? Thoughts are karma. So have you learned the answer? What did you learn? Are thoughts karma? I learned that thoughts are karma. Thoughts are not karma. Action is karma. No, thoughts are karma because it has come out from our past karma only. Ah, good. Now I'm happy you're in consciousness. Thoughts come from karma. No, thoughts are karma. Thoughts are coming from karma. Because, and that's why with the thoughts, no, just no, I am Sip asked the question. I am Sip, आपने पूछा, वो thought आ रहा है, thought कहाँ से आ रहा है? I am Sip, वो thought कहाँ से आ रहा है? समझ गए ना thought कहाँ से आ रहा है? वो आपका कर्म के हिसाब से वो thought आ रहा है. उसको, what did Rajendra teach you yesterday? When these thoughts come, let them flow, let them go. Huh? हमारे पंडित जी ने बोला था, let it flow, let it go. Okay. और कुछ कैलाश and Sushma Thakur. Thank you. Shubham Guruji. Kailash, sir, namaskar. My question is that in the present time, if we see Premanandji Maharaj is very famous. Okay, he left the home in the childhood. And many big celebrities also met with him. The doctor declared that your life is only 5 years now. And after that, still he is alive. Okay, kidney doctor declared that your kidney is in the last stage, and your life is only the 5 years now. So, and every time he in the Radhe Radhe chapter. So this is for the mukti for him or not? He will get mukti or not? And I don't know giving who the so many much beautiful speech also. प्रेमानंद स्वामी जी कौन है? अगर बहुत सेलिब्रिटी किसी के साथ बात करते हैं तो उसका मतलब थोड़ी मुक्ति मिलेगा. Virat Kohli, Anushka, so many celebrities met with कोई भी है, even and he is नरेंद्र living मोदी. in. अगर नरेंद्र मोदी ने किसी स्वामी को नमस्कार किया तो क्या वो स्वामी को मोक्ष मिलेगा? And he is living in Vrindavan and left everything of the life. My dear Kailash, we cannot judge anybody will get moksha. We cannot judge कौन enlightened है कि नहीं है. ना हम कर सकते हैं, ना हमारा काम है. ना हम कर सकते, ना ये हमारा काम है. अगर आप उनसे कुछ सीख सकते, सीखो. लेकिन वो मुक्ति पाएगा, नहीं पाएगा, हमारा बिजनेस ही नहीं. Agreed? Yes, agreed. But doctor declared that your life is 5 years. So why is life? Suppose आज मैं आपको डिक्लेयर करता हूं आप मर गए और आप एक्चुअली नहीं मरे.
तो उसका फिर क्या करेंगे? आपने बोला ये एयर ने तो डिक्लेयर कर दिया मैं मर गया, लेकिन देखो फिर भी मैं जिंदा हूँ। नहीं, तो but फिर क्या many doctors from the AIMS doctor also देखते हैं. So let me tell you, there are a lot of things in this world. Just now I was watching one podcast when lady is able to tell, अच्छा डॉक्टर मिस्टर कैलाश कुमार, अभी आपने कल चाय पिया या कॉफी पिया या आपने ग्रीन टी पिया? वो लेडी इज एबल टू टेल कि कल आपने क्या पिया. हाउ शी इज एबल टू टेल कि कल आपने कॉफी पिया या चाय पिया या ग्रीन टी पिया? वो कैसे जानती है? She is asking ना. If नहीं नहीं, she उनको पता नहीं. आप पहली बार आपसे मिला, आपसे आज वो आपसे मिला, और कल आपने लंच के लिए लंच के साथ चाय पिया, कॉफी पिया, ग्रीन टी पिया, क्या पिया वो जानती है. कैसे जानती है? देखा होगा. If she फिर आप कुछ वो तो फिर होगा. वो सोचते हैं, अच्छा आप बोलो, आप अपना एक फ्रेंड के बारे में सोचो. आपने सोचा फ्रेंड के बारे में? हाँ, आप सोच लिया. फिर वो अपने स्लेट पे लिखते हैं आपके फ्रेंड का नाम क्या है, वो लिखती है. कैसे वो जानती है आपका, आप कौन से फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं? ये तो माइंड वो है ना, माइंड पुलिंग. अयो हाँ, ये माइंड रीडिंग कर, वो जैसे जैसे अगर माइंड रीडिंग कर सकते कोई, मैं गिरीश को बोलता हूँ, गिरीश प्लीज रीड दिस, कैन यू रीड? गिरीश गिरीश बोलेगा यस आई कैन रीड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई कैन रीड. हाँ गिरीश, कैन यू रीड? व्हाट इज दिस गिरीश? व्हाट इज गिरीश? अनम्यूट गिरीश. ले मिराडोर रिसोर्ट एंड स्पा. देखो, गिरीश कैन रीड. इफ गिरीश कैन रीड दिस, व्हाई शी कैन नॉट रीड द माइंड? तो देन इट्स अ मैजिक ना. हम भी पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं. तो डॉक्टर कैलाश, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर, हमारे मुक्ति का, हमारा मोक्ष, हमारा लिबरेशन, हमारी इग्नोरेंस को ओवरकम करना. वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू कैलाश. हमें मीनिंगलेस बातों में जितना आप ध्यान देंगे, यू आर लूजिंग टाइम फ्रॉम द वैल्यूएबल थिंग्स. ओके सर, जी जी. मान लिया बात नहीं आप, या अभी भी आप ठीक है सर, वृंदावन में ठीक हैं? है. नहीं, वृंदावन तो खैर अच्छी जगह है सर. दैट इज वेरी गुड प्लेस. ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ. सुषमा एक बार ठाकुर, देखना सर जाके. दैट इज वेरी मैं गुड नहीं गया हूँ. प्लेस. मैं आपके कारण मैं वृंदावन जाऊंगा. सुषमा ठाकुर प्लीज बोलो. सर नमस्ते. नमस्ते. मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ. फर्स्टली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी अड़ जाती हैं, तो वही चीजों को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती थी आपसे कि जब हाँ जी, आपका सिग्नल, आपका सवाल नहीं आ रहा है. हेलो सुषमा जी, आपका सवाल नहीं आ रहा है. आप ट्राई करके आपका वीडियो ऑफ करो. शायद आपका सिग्नल वीक है. वीडियो थोड़ा बंद करो, फिर आपका ऑडियो आएगा. वीडियो बंद करके बात कीजिए. वीडियो बंद करके बात कीजिए. हाँ, अभी बात कीजिए. हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती थी कि जब एक इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, वो अपने कर्मों पर ध्यान दे रहा है, डेली रूटीन से सारी चीजें अच्छे से मेंटेन कर रहा है, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग के लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हैं, जहां वो वर्क करता है, अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं चीजों का मजाक उड़ाया जाता है, तो वो कैसे खुद को सही रख पाता है? क्योंकि हर टाइम एक सर पर जो होती है वो नेगेटिविटी छा ही जाती है, मोस्टली घर से भी बाहर से भी, तो वो कितनी देर इन चीजों पर स्टेबल रह सकता है? सुषमा जी, जो अच्छे काम करते हैं उनको हमेशा ऐसा होता है. जो अच्छा काम करता है उसका मजाक हमेशा उड़ाया जाता है. जो तो प्रभु के लिए प्यार नहीं, तो हमें समझना है. हमें समझना है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सही कर रहे हैं. और जो लोग वो हमें सपोर्ट नहीं करते, वो कुछ उल्टा सीधा बात करें, भाड़ में जाओ उनको. तो सर दूसरी बात ये भी होती है कि जहां हम वर्किंग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वही जूनियर को दबा देते हैं, और नौकरी तो हर एक छोटे एम्प्लॉय की जरूरत है. हाँ. अब तो हाँ जी,
वो दबाने दो। हमने अपना धर्म निभाना है, हमने अपना फर्ज निभाना है, हमें प्रभु पे विश्वास रखना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या ये चीजें पॉसिबल है कि हम इस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद? देखिए, नेगेटिविटी से निकलना ही हमारा जीवन का मकसद है ना। ये नेगेटिविटी से निकलना, प्रभु का विश्वास होना, सच्चाई का एहसास करना, अनुभूति होना, यही तो असली। आप इस कॉल पे कैसे आए? किसने बताया आपको ये कॉल के बारे में? मिस्टर विनोद सर ने। विनोद कहाँ से आए? कोई विनोद? अच्छा, ठीक है, कोई होगा कोई विनोद। तो मेरा मतलब ये है कि आपको सीधे रास्ते पे जाना है। ये रास्ते पे नहीं जाना कि जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं ये रास्ते पे जाओ, यहाँ पे मत खाओ, यहाँ नहीं। आपकी बुद्धि है, आप अपने बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि विवेक के हिसाब से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है? हाँ जी सर, मैं समझ गई आपकी बात। थैंक यू। हाँ, और कुछ नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कृष्ण, थैंक यू। फिर भी आइएगा, प्लीज ज्वाइन अस। हर रोज 8 बजे कॉल होता है। डॉक्टर कृष्ण, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कृष्ण सर, जो ये इन्होंने मेरे फ्रेंड ने बताया ना वृंदावन का, वो प्रेमानंद जी महाराज का, वो हाँ जी। वो उनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं जुलाई में उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, उसके बाद में 5 बार वृंदावन जा चुका मैं उनसे मिलने के लिए, पर वो अरे मिलते नहीं। मैं हाँ, एक चीज कॉमनली देख रहा हूँ जो हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है, सेम चीज वो एक्सप्लेन करते हैं कि सब में भगवान देखो, आप ये मन नहीं हो, ये तन नहीं हो, ये बुद्धि नहीं हो, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी वेरी गुड। एक सिंगल पॉइंट मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे आपने उनका विरोध, आपकी उन बातों में उनका कॉन्ट्री हुई या उनकी बातों में आपकी कॉन्ट्री हुई, नॉट इन इवन ए सिंगल पॉइंट। और तो ये तो बहुत जो अच्छी ये कह रहे थे, हाँ। जो कह रहे थे कि वो 18 साल पहले डॉक्टरों ने उनको किडनी फेल डिक्लेयर कर दिया था, बट उन्होंने, वो आज तक जीवित है, वो उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा, एक का कृष्ण रखा, और वो ये मानते कि एक स्पिरिचुअल पावर है जिन्होंने मेरे को जिंदा रख रखा है, और मेरा काम मानवता की हेल्प करना है। मैं अपने कर्मों से लोगों को भलाई कर रहा हूँ, मेरे को कोई गुरु माने या ना माने, बट मैं बातें कह रहा हूँ वो बातें मान लो। ये मांस मदिरा से दूर रहो, और अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार करो, और भगवान के गुण गाओ। जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, राम में, कृष्ण में, अल्लाह में, गुरु में, वाहिगुरु में, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसी का नाम लो। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि नाम रटने से कुछ होगा क्या, उन्होंने सिंपल मेथड ये बताया था कि आप अपने आहार विचार पे वो कंट्रोल करते हो, और अपने लाइफ को शुद्ध रख के अगर भगवान का नाम रट करते हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो डॉक्टर कृष्ण, जैसे अभी आपके फ्रेंड कैलाश कुमार ने बात किया, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट। ठीक है? अगर एक इंसान एहसास करता है कि मेरे अंदर भगवान है, if the man can come to know that there is sip inside me, so what does your common sense say? That sip can do any miracle inside the body or cannot do? Sip can do anything if we believe. अगर हमें एहसास हो जाए कि हमारे अंदर सिप है, तो किडनी को ठीक करना कौन सी बड़ी बात हुई? किडनी ने बनाया कौन? हाँ, तो वही कह रहे थे, जैसे कोई लोग जाके बोल रहे थे कि मेरी किडनी आप डोनेट कर लो। वो कह रहे थे कि भाई अगर तुम मेरे को किडनी की माला भी पहना दोगे ना, और भगवान नहीं चाहेगा मेरे अंदर एक सांस भी आगे बढ़े, तो मेरा कुछ नहीं होगा। और जब तक भगवान चाह रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ के बोलूं और आपको अपने प्रवचन से आपकी जिंदगी में सुधार लेके आऊंगा, तब तक भगवान मुझे पता नहीं कितने साल और जिंदा रखेगा। ये 18 साल नहीं, हो सकता है ये लंबा चले। डॉक्टर कृष्ण, जो एहसास करता है, अनुभूति करता है, वो तो जानता है वो तो अमर आत्मा है, वो कभी मरेगा नहीं। तन को तो एक दिन मरना ही है ना। हाँ, तो वो स्वामी वो प्रेमानंद जी महाराज अमर आत्मा ही है, बट मीडिया ने अभी इनको उठाया है क्योंकि मोहन भागवत जी वहां पे मिल के आए, विराट कोहली वहां पे मिल के आए, बहुत मिनिस्टर IAS IPS बहुत जा रहे हैं, और बहुत लंबी लाइन लग रही है। इवन मैं भी वहां पे गया ना, तो जैसे क्वेश्चन आंसर आप करते हैं वो भी करते हैं। तो उनके शिष्य ने ये बोला कि सर अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप इनका यूट्यूब सुनो, फिर भी आपके अगर विचार शांत नहीं हो रहे, फिर हम आपका इनसे वो करवा देंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जो मेरे फ्रेंड का पर्पज ये था
कि वो ऐसे बंदे हैं जो मीडिया से, इनसे, दुकानदारी से दूर रह के और इतने अच्छे सिंपल वे में स्पिरिचुअलिटी को समझाते हैं, जो एक आम आदमी को समझ में आ सकता है। See, let me tell you, spirituality is not a fancy subject. Spirituality is not a subject of the masses. अगर कोई समझता है ना ये बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है, देखो 10,000 लोग उनकी बात सुन रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल आदमी को 10,000 लोग आएंगे नहीं सुनने के लिए। कोई भी धार्मिक मैजिशियन के पास आएगा 1 लाख लोग, मैजिक शो, कोई भी मैजिक शो करेगा 1 लाख लोग देखे, क्या मैजिक है यार, क्या बढ़िया मैजिक है। स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागने वाले लोग बहुत कम हैं। You do not count a spiritual saint by the number of followers he has. Because a spiritual saint does not seek to have followers. Even if one person can realize the truth, the spiritual saint is satisfied. Even if one person is enlightened, enough. समझिए ना डॉक्टर कृष्ण? Yes, yes, got it, sir. लाइन होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो अच्छा बात करते हैं, सही बात करते हैं, वो अच्छी बात है। Let us focus on that. हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन भाषा में समझ जाते हैं लोगों को। आपने बोला ना रिलीजन फर्स्ट स्टेप है, वो हम स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन भाषा में समझाते हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके और वो स्पिरिचुअल पाथवे चल सके, एक नाम से न बंधे। जब तक हम रिलीजन से रिहा नहीं होंगे, हम कभी प्रभु को नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो सिर्फ एक नाम या एक रिलीजन पे नहीं बांध रहे, वो यही कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है, किसी धर्म के साथ में अपने आप को नहीं बांधना। ठीक है, वो ये कह रहे घर के जैसे 20 कमरे हो सकते हैं, वैसे धर्म तो एक कमरे हैं जो हमें एट एंड ऑफ द डे हम एक फैमिली के मेंबर हैं। हमारे अंदर तो एक ही है, चाहे आप सिख हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को मानते हो, डजेंट मैटर। I only want to tell you one thing before I close. My time is over. I only want to tell you one thing to close. If you get into the religious subject, the problem is you will get so lost that before you can realize your life will be over. Therefore, it is very important to go from the kindergarten of religion to the university of spirituality. You need pole vault. You have to leave that pole to jump over. अगर हम धर्म को पकड़ के रहेंगे ना, हम रस्मों रिवाज को पकड़ के रहेंगे ना, जिंदगी बीत जाएगी, मौत हो जाएगी, प्रभु का एहसास नहीं करेंगे। हमें प्रभु का एहसास करना है, प्रभु का एहसास करना है, प्रभु का एहसास करना है। With folded hands I bow down to you. Thank you.